Morning, everyone. Morning. Good morning, ma'am. Morning, everyone. Just have a look at the photo that I sent you right now. देखिए थोड़ा एक पिक्चर भेजा है आपको, मॉडल का फोटो है, एक्शन रिसर्च मॉडल इन योर फोन. Yes, ma'am. देख रहा हूँ. एक्शन रिसर्च मॉडल है, उसका पिक्चर है. This is exactly what we are going to study in today's class. Okay. इस पिक्चर में okay, let everyone join 2 minutes, otherwise they'll ask me to repeat again. Switch on your cameras, everyone. Switch on your cameras and please have a look at the photo that I just sent you. It will help you as a reference. फोटो देखिए, उसमें कहां तक ड्रॉ करना है. अगर एग्जाम में आएगा, you don't need to draw the entire picture. Okay. In this picture, can you see what is the first step? We are going to study action research model of organization development. This is a part of change management. हम ये टॉपिक थोड़ा रिशफल करके आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप चेंज मैनेजमेंट से अगर स्टार्ट करते तो मे बी यू वुड नॉट हैव स्टडीड इट, you would not have understood it with that ease. So now that you understand what is OD, now that you know what are the characteristics of OD, now that you understand what is change, why change is important, so you will be able to understand this action research model in a better way. और इसके बाद हम लोग चेंज मैनेजमेंट करेंगे, और चेंज मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में भी कुछ मॉडल्स है, उसको रिवाइज करेंगे. Look at the first step. Switch on your videos, everyone. For people who have just joined, let me tell you that I have sent you a picture. आप अपने फोन में ग्रुप में एक पिक्चर देखिए, वो एक्शन रिसर्च मॉडल का पिक्चर है. एग्जाम में आएगा तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, और मॉडल से ही इसको याद रखना. It will help you to remember the steps. Then you don't need to mug it up. The first step is the phases of model or the steps. Last class में we studied कि what are the features of action research model, right? उसमें आपने ये पढ़ा था कि ये एक cyclical process है,
Remember that? Yes, ma'am. Cyclical process का क्या मतलब होता है? Which repeats itself. Cycle is what repeats itself. Okay. So ये जो फिगर आप देखेंगे इसमें भी आपको रिपीट होता हुआ साइक्लिकल प्रोसेस नजर आएगा. For example, look at the first step. The first step is problem identification या फिर जो सेम चीज है perception of problems by key individuals. Okay. Perception of problems by key individuals. Key individuals मतलब जो मेन लोग होते हैं जो इस काम के लिए स्पेसिफाइड होते हैं. They are known as the key individuals. The second step is consultation with behavioral science expert. Behavioral science expert माने क्या मतलब हुआ यहाँ पे behavioral science expert का? क्या मतलब हुआ? कैमरा ऑन करो. 3-4 मॉडल है. इसका मॉडल नहीं समझोगे ना तो एग्जाम में सीधा मॉडल बनाने आता है, फिर लिख नहीं पाओगे. हाँ बताओ आकांक्षा. मैम जो कंसल्टेंट होते हैं जो वेरी गुड. तो बाहर के होते हैं. हाँ वेरी गुड. बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स माने मोस्टली बाहर के होते हैं. जो कंसल्टेंट होंगे या ओडी प्रैक्टिशनर्स होंगे उनको हम यहाँ पे बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स के तरीके से रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज data gathering and preliminary diagnosis by consultants. Since I have already told you that action research model is all about lots and lots of data gathering and the diagnosis of same, even after evaluation, a lot of data is collected to put it into a cycle again. So, इसमें क्या होता है कि आप data gathering और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस ऑफ द कलेक्टेड डेटा उससे स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंट्स. ठीक है. अभी हम और डिटेल्स में बताएंगे, अभी सिर्फ डायग्राम समझो. उसके बाद का स्टेप क्या है? फीडबैक टू द की क्लाइंट और ग्रुप. क्लाइंट माने यहाँ पे क्लाइंट का मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसल्टेंट काम कर रहा है. ठीक है. दैट बिकम्स द क्लाइंट. उसके नीचे जॉइंट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. जॉइंट डायग्नोसिस कौन कौन करेगा? Shovit Raj, who will do the joint diagnosis here? If you are not in the class, I'll better remove you. Neither you're responding. Wait. Neither you're responding nor your video is on. Is this the way you attend your class? At least respond. Fine, I'll remove you. Class में नहीं attend करना है तो. नीलू कुमारी. Rinal. Yes, ma'am. Joint diagnosis कौन करेगा? What is the meaning of joint diagnosis? You have any idea or not? No, ma'am. Say yes or no. Okay. Sunil, who will do the joint diagnosis? Any idea? Vishwajit? Vishwajit? Shubham? Yes, ma'am. Vishwajit, tell me who will do the joint diagnosis? See, the class cannot continue like this, okay? You people have very casual approach towards the class. I sent you a picture and I'm trying hard to explain it to you. Had you been in the class, I would have drawn it on the board.
this picture you have to draw. If in exam you have to if in exam you have to write about action research model, you need to draw the diagram and then explain the steps or points. Joint diagnosis, Akanksha, you were saying something? यस मैम, जो बाहर के कंसल्टेंट होंगे और जो अंदर के जो एम्प्लॉय होंगे दोनों मिलकर. वेरी गुड. यस, जॉइंट डायग्नोसिस का यही मतलब होता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं या ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं, दे टुगेदर विद द की पर्सनल्स ऑफ the people of the organization, they will be jointly diagnosing the problem after data collection कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इस पे एक्शन प्लान होना चाहिए. ओडी प्रैक्टिशनर कितना भी अच्छा हो, लेकिन given the fact that every organization has its own set of culture, every organization has its own, way of administration, way of values, attitude, belief. So the resistance that might come from the people could also be different. And this is the reason the key personnel of the organization, they have to cooperate great deal with the OD practitioners in order to have effective implementation of the action plan of the change which has to be brought about, which is desired to be brought into the organization. Okay. Next is joint action planning, which is setting objectives and goals, obviously setting objectives and goals. Next is action. Then finally the action will be taken. The next is data gathering and action. Okay. Feedback to the client group by consultant. And then you have, in the last step, you give feedback to the client. यानी diagnosis हुआ, आपने action किया, planning की, and then जो result आया, उसके बारे में भी बहुत सारा data collection करके भेजा जाता है, बहुत सारा data collection करके वापस client को भेजा जाता है. एंड देन उसके बाद से आप अगर ये डायग्राम ठीक से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू कर रहा है. यानी स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक is the actual step which is taken. From 10th onwards ये साइकिल रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 9th तक फीडबैक टू द क्लाइंट ग्रुप बाय कंसल्टेंट, यहाँ तक ये process hai, and after that the cycle is repeating in order to provide further data for diagnosis of other problems or effectiveness of the organization on the whole. Right, now we'll start writing the phases of the model. Right now इसका steps लिखो. ये picture समझ में आया? यस मैम. ये पिक्चर समझ में आया? और अभी जो फेजेस ऑफ मॉडल लिखवा रहे हैं, ये लिख के जब आप रिलेट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट. राइट डाउन. देयर आर 7 मेन स्टेप्स ऑफ द एक्शन रिसर्च मॉडल. किसी मॉडल को हमेशा बेहतर होता है कि आप किसी डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिए. There are 7 main steps of the action research model. Number 1, problem identification. जो डायग्राम का पहला ब्लॉक है, problem identification. See, what will we do in problem identification? Definitely, organization को हम लोग किसी change को कब चाहते हैं? When do we want change? When we feel that there is some kind of problem in the organization. Okay, हमको ये feel होता है change हम लोगों को generally तब feel होता है when we feel that there is some problem in the organization we're not able to solve. Okay. Now, this problem identification starts when जो key personnel है organization के, they feel it that there is something not right with the organization. There is something not at pace with the external environment, and that they need OD practitioners for solving the problem. So, the first step towards
bringing about a change is the problem identification. Okay, write down. This stage usually begins when a key executive, Akanksha, is there something funny going on in the class? Sorry, ma'am. Very bad, Akanksha. You being the CR, this does not suit you. Sorry, Anyway. sorry, ma'am. This stage usually begins when a key executive in the organization senses that organization has one or other problems. Senses that organization has one or other problems that might be solved with the help of an OD practitioner. Second, write down the second point. Consultation with a behavioral science expert. Consultation with a behavioral science expert. Explanation लिखिए. During the initial contract. Sorry, ma'am. During the initial contract, शुरू के contract में, during the initial contract, the consultant or change agent and the client carefully assist each other. The change agent has okay. During the initial contract, शुरू के contract में, the consultant or the change agent and the client, ठीक है? The consultant or the change agent and the client carefully assist each other. दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं. Carefully assist each other. The change agent has his own developmental theory. देखो, the change agent has his own developmental theory. And has his own developmental theory and must be conscious of the assumptions and values. Must be conscious of the assumptions and values. Sharing this with the manager from the beginning establishes an open and collaborative atmosphere. देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? कंसल्टेशन विद अ बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट. इसका मतलब है it is fine that the organization seeks help from a consultant who is outside the organization, who is expert in behavioral science. That is why he is known as expert.
or OD practitioner, whichever name you give to that person. But still, in the initial stages and in the later stages also, they work in close contact with each other. आप रिकॉल कीजिए कि जब आपको फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च बता रहे थे तो वहां पे ये लिखा हुआ था, ये लिखे थे ना आप लोग कि इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, रिमेंबर? Yes, ma'am. ठीक है. So even if that person is an expert, still what happens is that he works in close contact, he works in close assistance with the person or the key personnel who are from inside the organization. Okay, so this is what is being said. Now the consultant who is from outside the organization must have his own assumptions. उनका अपना कुछ थ्योरी होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनका अपना कुछ वैल्यूज होगा, उनका अपना कुछ अजम्पशन होगा. हम जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वी स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ हाइपोथेसिस और सम काइंड ऑफ अजम्पशन. सो these assumptions must be conveyed to the key personnel, yani the manager of the organization, in order to maintain an open and collaborative atmosphere. This is what is being called in this point. Okay, next point, data gathering and preliminary diagnosis. For those of you who have just joined, let me tell you, I have sent you a picture in the group. That picture or that photo is of action research model. This is an important model. This might come in your exam. And if you are given this model, please draw a picture first and then explain the points. Okay. So till point number 9, it is a sequence of how action research model proceeds. And after that, we can see the cycle repeating, just as we wrote in the features of action research model in the last class. Okay. Write down the third point, data gathering and preliminary diagnosis. First, this stage is usually completed by the consultant often in conjunction with organizational members. Often in conjunction with organizational members. अब एक मिनट स्टॉप करो. रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े हो तुम लोग? टेल मी. क्या मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े हो थोड़ा बहुत भी? लग तो नहीं रहा है. नो मैम. नहीं. डेटा गैदरिंग समझ में आता है कि डेटा कैसे गैदर किया जाता है, इसका मेथड्स या प्रोसेस कुछ कहीं किसी क्लास में पढ़ा हो? ये कि प्राइमरी सोर्स होता है, फिर सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होता है. ठीक है, वो तो टाइप्स ऑफ डेटा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी. क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी? जो रॉ डेटा होता है, जो डायरेक्ट सर्वे करके ऑब्टेन किया जाता है, वो प्राइमरी डेटा होता है. और फिर उसको इंटरप्रेट करके जब ऑफिस में सामने लाया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करके, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं. अच्छा ये बताओ. सेकेंडरी डेटा मतलब दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और प्राइमरी डेटा जो हम लोग सर्वे करके कलेक्ट करते हैं. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब एग्जाम्पल से क्लियर करो. ये बताओ कि अगर तुमको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए मिल जाए, ठीक है, रिपोर्ट बनाने आ जाए, और उसके लिए तुम थोड़ा सा किस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल हेल्थ लेने के लिए एक मैगजीन से रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हो, ये प्राइमरी डेटा हुआ कि सेकेंडरी? सेकेंडरी डेटा मैम. ठीक है. सेंसस प्राइमरी डेटा होता है कि सेकेंडरी? मैम प्राइमरी. ठीक है. उस सेंसस का जब इंटरप्रिटेशन कर दिया एनएसओ ने, उसके बाद तुम उसको यूज कर रहे हो, तो वो प्राइमरी हुआ तुम्हारे लिए कि सेकेंडरी? सेकेंडरी. ठीक है. अब देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़े हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आगे जाओगे तो फिर पढ़ोगे. देखो,
रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है रिसर्च के लिए जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तुम मुस्कान ने बोला कि मैम जो सर्वे से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा सिर्फ सर्वे से कलेक्ट नहीं किया जाता है, और भी मेथड्स होता है उसको कलेक्ट करने का, ठीक है। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो रिसर्च में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसका बहुत सारा मेथड्स होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। सर्वे एक तुमने पॉइंट बताया कि सर्वे से डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। इंटरव्यू से भी डेटा कलेक्ट होता है, राइट। इंटरव्यू एक, हाँ बोलो। क्वेश्चनारियो से मैम, क्वेश्चनारियो। क्वेश्चनारियो नहीं, क्वेश्चनायर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनायर्स। क्वेश्चनायर, ओके, करेक्ट इट्स प्रोनाउंसिएशन। उसको लोकल में है मैम, प्राइमरी मेथड में। हाँ, उसको कहते हैं क्वेश्चनायर। सर्वे हुआ, इंटरव्यू हुआ, क्वेश्चनायर हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्व, देख रेख में रखने, देख देख रेख करके, में रख के। हाँ। जैसे देखो कुछ चीजों का ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे ना, ओबी जैसे एमबीए वगैरह में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना होगा तुमको, सॉरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में वहां पढ़ोगे। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तुम कई बार ऑब्जर्वेशन मेथड, हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मेथड हमको यूज करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर आप लोगों को बता देंगे कि तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, वो कॉन्शियस हो जाएंगे, राइट। अगर आप बता देंगे, एक क्वेश्चनायर भरवाएंगे उनसे, दे विल बिकम कॉन्शियस। एंड समटाइम्स the survey method, interview methods, questionnaire, these are not applicable with certain set of people, जैसे ट्राइबल लोग, ठीक है, आदिवासी लोग, जो सो कॉल्ड हमारे जैसा सिविलाइज्ड नहीं है, दे हैव देयर ओन कल्चर ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपको उनको ऑब्जर्व, आपको उनके बारे में रिसर्च करना है, देन यू हैव टू ऑब्जर्व देम, ठीक है। तब हम डेटा ऑब्जर्वेशन मेथड से कलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के ऊपर अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो तुम क्या उससे क्वेश्चन पूछोगे तो क्या ये वो एक मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि एक फुल फ्लेजेड आंसर देंगे क्या, कॉन्क्रीट आंसर दे पाएंगे बच्चे छोटे? नो नहीं मैम। देंगे ना। उनका डेटा कैसे कलेक्ट होगा? ऑब्जर्वेशन मेथड से, ठीक है। उसके उसके अलावा देखो कुछ चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कि आप रिवील नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें खास कर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और एचआर अब बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो इस तरीके की चीजों में जब रिसर्च होता है तुम लोगों को बता नहीं सकते हो कि हम आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में, ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से एक ऑब्जर्वर हायर करती है, यू नो, दे हायर अ रिसर्चर फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको ये नहीं बताती है कि ये एक रिसर्चर है, उसको एज एन एम्प्लॉय वो प्रिटेंड करती है कि ही इज अ फ्रेश रिक्रूट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो बताती नहीं है। उससे क्या होगा, वो बंदा तुम्हारे साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स में है, तुम्हारे साथ फॉर्मली वो काम कर रहा है, तुम कैंटीन जा रहे हो वहां पर है, तुम ऑर्गेनाइजेशन के क्लब में जा रहे हो वहां पर है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बहुत इंटरनल मैटर पता करना होता है ना, तब वो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है। इसीलिए डेटा गैदरिंग और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस में कभी कभी बहुत इंटरनल मैटर को पता करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का भी यूज किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड हम इसलिए समझाएं क्योंकि आपको नहीं होगा आइडिया ऑब्जर्वेशन का इस लेवल पे, और बाकी मेथड्स का होगा। सर्वे आपको पता है, घूम घूम के डेटा कलेक्ट करना। यस मैम। क्वेश्चनायर्स आपको पता है, 10-15 क्वेश्चन होता है जिसको कि एक स्ट्रक्चर्ड सेट में बनाया जाता है। और क्वेश्चनायर का भी कुछ रूल होता है कि आप कोई जार्गन मत यूज कीजिए, बहुत टफ ग्रामर यूज मत कीजिए, राइट सिंपल क्वेश्चंस जो लोग पढ़ें और उसको आंसर कर सके ताकि आपको प्रॉपर और करेक्ट डेटा मिले। इसके अलावा इंटरव्यू मेथड इज अ मोस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा गैदरिंग, ठीक है। आप इंटरव्यू पीपल को कॉल कीजिए, you call the employees and then you collect the desired data from them. इसके अलावा
एक और मेथड होता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन लास्ट 1 year or 2 year or whatever concerns you properly, so you can collect it by that method also. अब समझ में आया इंटरव्यू डेटा गैदरिंग एंड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस? आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लिखो चलो। The four basic, इसी में कंटिन्यू करो। The four basic methods of data gathering are, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के बाद हाँ, the four basic methods of data gathering are interviews, observation, questionnaires, write question, and NAIRES, questionnaires. Interviews, observation, questionnaires, and organizational performance data. And organizational performance data. The most effective diagnosis starts with observation, proceeds to semi-structured interview, and concludes with questionnaires. ठीक है, डन, लिख लिया सब? नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। Feedback to the key client or group, right? The next fourth point. Feedback to the key client or group. Write down. Since action research is a collaborative activity, the data is fed back to the client. The data is fed back to the client. The feedback step in which the group is given the information. The feedback step in which the group is given the information gathered by the consultants. मैम द फीडबैक के बाद एक बार फिर से रिपीट The feedback step, फटाफट लिखो, ठीक है? The feedback step in which the group is given information. The feedback step in which the group is given the information gathered by the consultants. Helps the group determine the strengths and weaknesses of the organization. Okay. In the previous step, what did we see? That the data is collected by the consultants or the external agent, and कौन-कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट होता है?
It could be interview method, it could be observation method, it could be survey method, it could be any other method, organizational performance method. And when this data is collected, this data is fed to the client or group. अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ऑब्वियसली अगर हम किसी को हायर किए हैं तो वो डेटा कलेक्ट करके दैट पर्सन विल ब्रिंग द डेटा टू मी, राइट? वो डेटा मेरे पास लाया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है और इस रिगार्ड्स में इतना डेटा कलेक्ट हुआ है। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली जो कंसल्टेंट को इंपॉर्टेंट लगता है वही डेटा कलेक्ट होता है, देन द डेटा गेट्स प्रोसेस्ड विद द क्लाइंट आल्सो। नेक्स्ट है joint diagnosis of the problem. Write down joint diagnosis of the problem. The group discusses the feedback. The group discusses the feedback The group discusses the feedback and the focus returns to research. And the focus returns to research as the change agent and the members of a group and the members of a group discuss whether this is a problem, on which the group wants to work. On which the group wants to work. A close relationship exists among data gathering, feedback, and diagnosis. Data gathering, feedback, and diagnosis. Because the basic data from the client have been summarized by the consultant and presented to the group for further validation and diagnosis. For further validation and diagnosis. Okay. See, what happens? That data is collected, that data is again fed back to the client. उसके बाद client थोड़ा उसका analysis करता है, and then there is a step of joint diagnosis of the problem. Joint diagnosis means अभी discuss किया था class start होने के time पे, means the diagnosis in a collaborative activity with the consultant and the client. Now, since the client has given the data or submitted the data in the form of feedback to the client, now it depends upon the consultant and them and the consultant and the client to jointly think that now this is the data or this is the problem we want to proceed with. इस problem के साथ ही हम लोग proceed करना चाहते हैं. Okay, then joint diagnosis मतलब उस प्रॉब्लम को jointly समझना कि हाँ ये प्रॉब्लम है और अब इस प्रॉब्लम को लेकर के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं. यानी जैसे
कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उस पर बहुत डायग्नोसिस होगा कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है, ऐसे रेजिस्टेंस आ सकता है, पीपल कुड बी अनविलिंग टू चेंज, और देयर इज सम एक्सपर्ट नीडेड, there are not enough facilities, there are not infrastructure to adapt to that technology and all of these things. Okay, this is just one example. बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसको कि ओडी प्रैक्टिशन की जरूरत हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये सब जो बीसीजी है, मैकिंसी है, ये सब जो दुनिया की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, दे गिव ओडी प्रैक्टिशनर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आया? And who are these people? These are the people from the biggest B schools of the world. जैसे अभी IIM अहमदाबाद का फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट्स हुआ है, and imagine the biggest management consulting, finance consulting companies, management consulting companies of the world, BCG, Boston Consulting Group, they hired a lot of people from IIM अहमदाबाद। तो यही सब वो वैसे लोग होते हैं जो बाद में जाके ओडी प्रैक्टिशनर्स बनते हैं, एंड देन दे रेंडर the help to the big organizations to function properly. Okay, next point लिखो, actions. Now the अच्छा, किसी को आप लोग उसके पहले पढ़े हैं अनफ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, कर्ट लेविन का चेंज, कुछ भी? Anyone is aware of the word unfreezing? No, ma'am. नहीं, ठीक है। Action, write down action. The consultant and management jointly agree. The consultant and management jointly agree on further actions to be taken. The consultants and management jointly agree on further action to be taken. This is the beginning of the unfreezing process. This is the beginning of the unfreezing process. As the organization moves to a different quasi-stationary equilibrium, quasi, Q-U-A-S-I, quasi, छोटा सा डैश देके लिखो, stationary, quasi-stationary equilibrium. Quasi-stationary equilibrium. Now, देखो, in the last class we were discussing कि अगर आपने 2 साल से जैसे क्लास किया, ये सब अगर चेंज कर दिया जाए और चेंज करके फिर एक न्यू प्रोसेस लाया जाए बीबीएम थर्ड ईयर में काम करने का, तो आप पुराना भी प्रोसेस याद रखें, आप नई भी चीज को एम्ब्रेस कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। यू विल ऑलवेज इन अ ambivalent state of mind, perturbed state of mind. अगर आपको पुराने चीजों को छोड़ना है, you have to unlearn that, right? ये अदरवाइज भी लाइफ में याद रखना कि अनलर्निंग इज एज इम्पोर्टेंट एज लर्निंग। हम लोग सीखते जाते हैं नई चीज, लेकिन पुरानी जो गलत चीज सीख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ना जरूरी होता है। तो while you keep learning, please remember that you need to keep an eye on what you need to unlearn in life also. Okay? ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस पे भी काम करती है कि ओडी प्रैक्टिशनर का क्या मतलब, ओडी प्रैक्टिशनर से क्या मतलब होता है कि आप एक बिहेवियर, एटीट्यूड या पूरा कल्चर चेंज कर रहे हैं। अब कल्चर, हम लोगों को बोला कि हम लोगों का एक कल्चर है, उस कल्चर को अचानक से छोड़ के किसी नई चीज में अडेप्ट करना क्या आसान होता है? नहीं होता है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जिस तरह काम किए आ रहे होते हैं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑटोक्रेटिक अप्रोच से चलता है, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन का, और अचानक से आपको ये नीड फील होता है कि इफ दिस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कंटिन्यूज टू रिमेन,
the need of the hour will not be matched ever. यानी अभी बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा सा डेमोक्रेटिक अप्रोच होना जरूरी है. You need to involve people in, you need to have the employees participating in decision making, at least give their feedbacks and suggestions. That should be an open medium of communication in the organization. शायद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सके. Understood? So this unlearning of the old bureaucratic structure in the organization will not come in an easy way. इसी को कहते हैं अनफ्रीजिंग. अनफ्रीजिंग मतलब पुरानी चीजों को छोड़ना. ओके. और फिर कुछ देर इनको स्टेशनरी किया जाता है, मतलब पुरानी चीजों को छोड़ना जाता है. इसमें देखो ये सब, ये बुक्स वगैरह में बहुत छोटे फॉर्म में दिया जाता है, बट जब आपको अनलर्न किया जाता है तो कॉन्स्टेंटली आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा, ये फर्दर तुमको कैसे ग्रो करेगा. वी विल ऑल विन का स्ट्रैटेजी सबके दिमाग में फीड किया जाता है. These are the various tactics which are used in unfreezing. समझ में आ गया? क्वाजी इक्विलिब्रियम, क्वाजी स्टेशनरी इक्विलिब्रियम मतलब लगभग स्टैंड स्टिल पे, लगभग कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब जाकर के हम नई चीज को फीड कराते हैं और एम्प्लॉइज को. समझ में आया ये स्टेप? यस मैम. ओके. इसके अलावा आकांक्षा और राजेश एंड मुस्कान एंड सुनील एंड कल्पना, उसके अलावा बाकी लोगों को भी समझ में आया? यस मैम. चलिए ठीक है. लास्ट स्टेप लिखिए, डेटा गैदरिंग आफ्टर एक्शन. डेटा गैदरिंग आफ्टर एक्शन. Data gathering after action. देखो, since action research is a cyclical process, since action आवाज नहीं. अभी बस पॉइंट स्टार्ट ही कर रहे हैं. डेटा गैदरिंग आफ्टर एक्शन. Since action research is a cyclical process, since action research is a cyclical process, data must also be gathered. Data must also be gathered after action has been taken. After action has been taken. In order to monitor, measure, and determine the effects of the action. And determine the effects of the action. Now, this is also done. This is also done to feed the results. This is also done to feed the results back to the organization. Back to the organization. Which leads to re-diagnosis and new action. Which leads to re-diagnosis and new action. ठीक है? ये आपको पहले ही बता दिया है कि ओडी पूरा, ओडी में चेंज मैनेजमेंट हो, कोई भी मॉडल हो, it is a cyclical process, it is a collaborative process. Now, data gathering after action. तुमने एक्शन कर लिया, तुमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. But why is data gathering important? Since I already told you that action research model is all about lots and lots of data collection, not just during diagnosis, but even after diagnosis. So even after diagnosis, the data is further collected to feed it for re-diagnosis of another problem and new actions to be taken. अब थोड़ा सा ये फिगर देखो, ये वाला पॉइंट समझ में आएगा.
रीडायग्नोसिस वाला फिगर है, रीडायग्नोसिस एंड एक्शन प्लानिंग विद द क्लाइंट एंड कंसल्टेंट्स। उसके बाद का पॉइंट है न्यू एक्शन, यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। ओके, with this we complete action research model of planned change। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Now I'd like to discuss something. See, this chapter, I know this involves a lot of concepts, but this is also important, this I am telling you, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपको इस चैप्टर का नॉलेज होता है, इट इज ऑलवेज गुड फॉर योर सीवी। फाइन, मतलब क्वेश्चंस या आंसर फ्रेम करना या इंटरव्यू में बैक आंसर करना इसमें हेल्पफुल होता है। सो इफ यू वांट, आई कैन कीप द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज टुमारो फॉर अ रिवीजन ऑफ ऑल दैट वी हैव डन टिल नाउ, इफ यू वांट। डू यू वांट दैट? क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाएगा अभी, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चेंज मैनेजमेंट है, तो थोड़ा सा पहले अभी तक का रिवाइज कर लो एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक्स की तरफ पढ़ेंगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो फिर कल का क्लास लेक्चर की तरह नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे सिर्फ, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा, तब फिर रिविजन जल्दी होगा, याद रहेगा ज्यादा दिन तक। ठीक है, चलो ठीक है।